Hello, everyone, and this is the eighth episode of Unhinged with Tushar. And today I'm going to tell you the most embarrassing story of my life. अब देखो मैंने ज़िंदगी में बहुत सारा embarrassing stuff किया बट दिस डेफिनेटली कम्स इन टॉप 5. सो लेट्स गेट इनटू दैट. तो हुआ क्या, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट सेट करते हैं पहले. तो हुआ क्या कि 14 साल में दिल्ली में रहा, 14 साल में नॉर्थ दिल्ली में रहा. ठीक है. उसके बाद मैं 3 साल हरियाणा में रहा. एंड देन आई केम बैक टू साउथ दिल्ली इन हॉस्कास टू टेक जेई कोचिंग आफ्टर टेकिंग अ ड्रॉप ईयर. 12th क्लास के बाद एक ड्रॉप ईयर लेके मैं बस जेई कोचिंग के लिए साउथ दिल्ली आ गया. एक दिन मेरे को सूझा कि अपने पुराने घर वापस चलते हैं. रैंडमली बस दिमाग में आ गया कि पुराने घर वापस चलते हैं. तो मैंने अपने एक दोस्त को कॉल किया जो जिससे मेरी 3 साल से बात नहीं हुई है, लेकिन मैंने उसको कॉल किया. उसने मेरा कॉल एक्चुअली उठा लिया. मैंने उसको बोला कि ब्रो मैं आ रहा हूँ, तू स्कूटी निकाल लेगा क्या. उसने कहा मैं पहुँच जाऊँगा. सो दैट्स वाई आई लाइक बॉयज़ एंड बॉयज़ फ्रेंडशिप. लाइक मेरी उस बंदे से 3 साल तक कोई बात नहीं हुई, लेकिन जब मैंने उसको कॉल करा और उसको बोला कि मैं आ रहा हूँ तो स्कूटी ले, वो लेकर आ गया. सो या दैट्स वन थिंग अबाउट बॉयज़ एंड बॉयज़ फ्रेंडशिप. बट या दैट्स नॉट द स्टोरी, लेट्स गेट इन टू दैट. तो आई फाइनली रीच देयर. मेरे दोस्त के साथ मैं पूरा ऐसे घूमा. एंड पूरे सफ़र के बाद, पूरा ऐसे घूमने फिरने के बाद, उससे बात करने के बाद पिछले 3 साल की, मैं उसको एक जगह पे ले गया. और वो था एक बंदी का घर. एक बंदी के घर के सामने हम दोनों खड़े हैं. और वो मुझसे पूछता है कि ये कौन है. मैंने कहा कि ब्रो मैं इसको पसंद करता था व्हेन आई यूज्ड टू लिव इन दिल्ली. और लास्ट टाइम वी टॉक्ड वाज लाइक 1.5 years अगो. सो या 1.5 साल पहले मैंने लगभग बात की थी उससे पहले. एंड आई थिंक आई शुड नॉक हर डोर एंड जस्ट टॉक टू हर. एंड I don't know what. And I used to still like her after 3 years, and not because like there was many reasons, because it was like I didn't know कि like okay you should not obsess over girls like that and everything. But yeah, that 14-year-old obsession didn't went away when I was 17. So yeah, I was obsessed with that girl. Not obsessed, but I just there was some hope somewhere. कि like okay, at 14 I used to like her. We used to have so much fun, and I used to like her when I was 14. Puberty hitting, shit like that. But yeah, and also I didn't get a lot of female interaction when I was in Haryana. So there was a lot of factors playing around here. But yeah, मैं उस बंदी के घर के सामने खड़ा हूँ. और मेरे को थोड़े ही देर बाद रियलाइज़ हो जाता है कि ये बहुत ही बुरा आइडिया है. मेरी 1.5 साल से उस बंदी से बात नहीं. इट बी सो क्रीपी एज फक. लाइक मेरे को नहीं पता था उस टाइम पे मेरे को क्रीपी लगा ये वो चीज़ या नहीं, बट ये गलत लग रही थी, इतना पता था. अब रेट्रोस्पेक्ट में सोचता हूँ तो या इट वॉज क्रीपी एज फक एंड नो वन शुड डू इट. बट या जो मेरा दोस्त है उसने मेरे को एक चीज़ बोली. उसने इतने मूल्यवान शब्द बोले मेरे को कि मान ले तुषार तू मरने वाला है. और जब तू मरने वाला है तो इस मोमेंट के बारे में सोचेगा. पता नहीं तेरे को आगे जाके कैसी गर्लफ्रेंड कैसी वाइफ मिलेंगे, बट या तू फिर जब भी तेरा झगड़ा होगा या शिट होगा, कुछ भी होगा तेरी रिलेशनशिप वाली लाइफ में, तो इस मोमेंट की तरफ देखेगा और बोलेगा कि शायद उस दिन पे बेल बजा दी होती. वो शायद 3 इडियट्स से इंस्पायर्ड था. ठीक है. और उसने मेरे को ये चीज़ बोली. और वो मेरे से छोटा था. वो बंदा मेरे से छोटा था. पता नहीं मैंने उसकी बात क्यों सुनी और मैंने जाके बेल बजा दी. फॉर्चुनेटली उस लड़की ने ही गेट खोला. और मैं उसको क्या बोल रहा हूँ, मैं उसको ये नहीं बोल रहा हाय हेलो शिट लाइक दैट. मैं उसको बोला ब्रो सुन, आई नो यू आर सरप्राइज टू सी मी एंड एवरीथिंग, बट मैं भी एक दोस्त के साथ हूँ. कैन यू गिव मी योर नंबर एंड आई कॉल यू एंड वी कैन टॉक अबाउट लाइक व्हाट हैपेंड राइट नाउ. एंड शी एक्चुअली गेव मी हर नंबर, which was cool. I guess like I had no hopes of getting her number, but I got her number and I got in touch with her again. So yeah, this happened. अब मैं तुम्हें सेकंड पार्ट नहीं बता रहा स्टोरी का बिकॉज दैट इज टू एम्बैरेसिंग टू एडमिट हेयर. But yeah, it actually happened, and I should not have done that. Like, you should not be knocking at someone's house whom you have not met for 1.5 years, and especially when you're, you're just 17 and you think you're in love. But yeah, you should not be doing that. It's creepy as fuck. Never do that. But yeah, that's one of the most embarrassing story of my life. What I want to get away from it, like, भाई मेरे दिमाग में ये स्टोरी आई क्यों. तो हुआ क्या कि मैं बहुत ज़्यादा डेथ के बारे में पढ़ रहा था. एंड समवन इन माय फ्रेंड ग्रुप टोल्ड समथिंग अबाउट अर्जेंसी एंड एवरीथिंग. एंड देन आई वाज सीइंग दिस पॉडकास्ट ऑफ एलेक्स hormozy एंड ही सेड कि लाइक death is a fucking great motivator. Like, he did not say exactly say that, but yeah, this was what he meant. Like, death is the only motivator. Like, everything you do in life is somehow connected to you not dying, and that's why you do it. And it was kind of mind blowing to think about for some time, because first of all I think death is interesting. Second thing, I think is ki I have seen, like, like, I saw this tweet ki like people do more hard work while finding a job than in the job, and I totally agree with it. I think even I do an extra little effort when I'm trying to find a job, and not because
एंड आई थिंक इट्स बिकॉज क्योंकि मेरा थॉट प्रोसेस ऐसे नहीं चलता जॉब ढूंढते हुए कि ओके आई वॉन्ट टू जस्ट फाइंड अ जॉब. इट नेवर इज लाइक दैट. इट्स लाइक कि अगर मेरे को जॉब नहीं मिली तो आई बी अ फेलियर एंड एवरीथिंग. आई वोंट हैव मनी. आई be begging and shit. I'll be in loan from someone and everything, and eventually I will, I will just, I'll be crushed by the loan. I'll crushed by the anxiety, and eventually I will have some bad thoughts, and I might do something, you know. So this is the kind of thought process that goes in my mind when I'm trying to find a job, and I think that motivates me to go an extra step in trying to find a job. So I do a lot of hard work while finding a job, and I think it's true for most people. Like most people, when they lose a job, they suddenly get a jerk and they are like, I have to find a job. I'm going to die if I don't find a job. And see, if you're working and you suddenly leave work, the anxiety just eats you up. The anxiety just eats you up. And I think there's a lot of factors that plays in. And then sir, and one of the factor is death, and that is the biggest motivator while trying to find a job. Because thought process सबका ऐसे ही होता है. If you're a family guy and suddenly your business is in loss, like there's a lot of stress, and then eventually you will be also like, सब छोड़ के चले आएंगे, and then I'll be alone, then I'll be anxiety ridden, then and eventually, death. So it's just too much. So yeah, that's what I was thinking about. Second thing I was thinking about was, as I told you in the last podcast, that I'm reading Attached. I think you should see that podcast and everything. And I'm struggling with the ideas of attachment styles and everything. One thing that mentioned was like, uh, there are three attachment styles. I'm not going to get into that, but I'm going to tell you one attachment style, that is anxious attachment style. And in anxious attachment style, what you do is like you crave intimacy and everything. एंड अगर तुम्हारे रिलेशनशिप में सडनली हल्का सा भी कुछ हो गया, लाइक मे बी कोई बंदा काम कर, लाइक देर इज़ वन गर्ल और देर इज़ वन गाय, और उसका पार्टनर जस्ट काम कर रहा है, जस्ट काम कर रहा है, एंड दे आर इन अ लिटिल डिफरेंट मूड देन देम दे आर, एंड दे सम के लाइक आई एम वर्किंग राइट नाउ, आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ एंड शिट लाइक दैट. They think like something is wrong with the whole relationship, and their relationship is going to die and everything. And one solution to this kind of anxious relationship was given in the book was ki, try to have a mindset that you have a lot of options, because anxiety, anxious attachment style तब डेवलप होता है जब डेवलप होता है, या फिर देयर इज़ अ वन कोर पार्ट कि लाइक तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास ऑप्शंस नहीं है. तो जब भी तुम किसी से मिलते हो और तुम्हें थोड़े से भी स्पार्क्स आते हैं या फिर कुछ भी लगता है, या फिर तुम एक रिलेशनशिप में होते हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हें ऐसा रिलेशनशिप वापस मिलेगा ही नहीं. एंड आई थिंक most of the guys are in that scenario. Most of the guys in that scenario, especially in India, 12 to 19 range, and even later on, they are in the range कि like, oh, अगर मैंने ये relationship lose कर दिया तो I will not find anyone. और उसकी वजह से they go into the anxious attachment style. And I think something similar happened to me. मेरे को लगा कि अगर मेरे को ये लड़की नहीं मिली जिससे मैं 14 साल की उम्र में बहुत ज़्यादा प्रेम करता था, तो मेरे को और कोई मिलेगा नहीं. This is what I thought. This is what I actually thought. And that's why I was anxiety ridden, and I just did something. So yep, that was my thinking process going on. And also, I think in my last relationship, I know I should not be talking about my previous relationships. People were involved, but I'm not taking their names. So in my previous relationship, I think I got into a very anxious attachment style because the other person was avoidant. And I think it's true, like attachment styles change by the situation around, and I think it has not been talked about in the book as much it should have. I think I'll mention in my next newsletter as well. If you're not subscribed, you should subscribe to my newsletter. It's great. And yeah, I think I will think more about it and maybe present a good piece tomorrow or whenever I'll write a newsletter. So yeah, look out for that. And yeah, that's it for the podcast. Today was a bit short, yeah, bit short, but I think yeah, I've told you the most embarrassing story of my life. uh, you should share this podcast. Like, भाई अगर मैंने ये सब बता दिया और उसके बाद भी तुम शेयर नहीं करो, मैं अपनी लाइफ की स्टोरीज बता रहा हूँ विच आर लाइक समटाइम्स रियली हॉरिबल, और उसके बाद भी तुम शेयर नहीं करो, तो देन व्हाट्स द पॉइंट. अगर मैं एम्बैरेस हो नहीं वाला हूँ इंटरनेट पे, तो ढंग से ही कर दो, ठीक है. सो या दैट्स इट आई गेस. बाय बाय. शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, रिंग बेल बजा दो, वट एवर, डू द होल थिंग. एंड कॉमेंट्स करो यार, अच्छा लगता है मेरे को तुम कॉमेंट करते हो किसी भी चीज़ पे. सो आई लाइक दैट, सो डू दैट. बाय.